उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति यानी सनातन संस्कृति दुनिया के यानी विश्व के हर कोने में आज फैला हुआ है। हमारे दक्षिण गुजरात नवसारी जिले के अंतर्राष्ट्रीय कथाकार श्री प्रफुल्ल शुक्ल जी वो पहुंच चुके हैं यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, लंदन और लीड्स में उनके भागवत कथा का मंगलाचार्य हो चुका है। लीड्स यूके में चल रही भागवत कथा में ब्रिटिश महिला नायिका टीना किम्थ की कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल से विशेष मुलाकात हुई और भारतीय संस्कृति पर सत्संग का सभा भी रखा गया। वहाँ पर लंदन के लोगों ने वहाँ पर कथा का भरपूर लाभ लिया और कथा के साथ उन्होंने गरबा के धुन में उनकी कदम थिरके और गुजराती संस्कृति और भारतीय सनातनी संस्कृति में हर व्यक्ति ने उस कथा का सकारात्मक लाभ लिया। चलिए सीधे पहुंचते हैं लंदन और वहां से प्रफुल्ल शुक्ल जी से बात करते हैं। नमस्कार प्रफुल्ल जी, कैसे हो आप? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम सीमा जी। उज्जवल भारत टीवी न्यूज के लाखों दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। यहाँ लीड्स 16 में हमारे कौशल्याबेन जगदीश भाई पारेख के वहाँ उसके निवास स्थान पे भागवत कथा कल से शुरू हो गई है। ये जो भागवत कथा है वो उनके पितरों के स्मरणार्थ है, पितरों की शांति के लिए है। और हमारे मुख्य यजमान कौशल्याबेन और जगदीश भाई दोनों साथ में बैठे हैं। तो क्या होता है सनातन धर्म में? हमारे शास्त्रों में कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास में जो भी आपसे सत्कर्म हुए उसका पुराण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से अधिक फल मिलता है। ऐसा ये अधिक मास को वरदान भगवान की ओर से दिया गया है। पहले तो ये मास का नाम मलमास था, लेकिन जब उसने भगवान का आश्रय किया तो भगवान ने उसे 12 मासों में से श्रेष्ठ मास का वरदान दिया। ये अधिक मास में जितना कथा श्रवण करे, जितना हरि कीर्तन करे, जितना दान पुण्य करे, वो अधिक गुना फल देता है। यज्ञयाग हवन की भी इस अधिक मास में बड़ी महिमा है। यहाँ लीड्स के अंदर इस श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और इस कथा में हर दिन जो भी उत्सव आएंगे बड़े धामधूम से मनाएंगे। हमारे कौशल्याबेन और जगदीश भाई पारेख हमारे इलाके के ही है, नवसारी जिले के ही है। और यहाँ उसका जो भाव है, यहाँ जो उसका एक कथा के प्रति लगाव है, बड़ी उदारता से, बड़े भाव से। ये दोनों वैसे तो निवृत्त है, फिर भी उसके 4 बेटी है, वो भी इस कथा में शामिल होंगे सब। और उसने सभी अपने सगे वाले रिश्तेदारों को भी इनवाइट किया है। और अभी अभी लीड्स में जो राम कथा पूरी हुई है, वहाँ के श्रोता भी इस कथा में आएंगे और कथा श्रवण करेंगे। भागवत की कथा कलयुग का कल्पवृक्ष माना गया है। यदि कलयुग में जो कोई कल्पवृक्ष है तो श्रीमद् भागवत है। और कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो भी कामना हम धारण करते हैं वो भागवत भगवान पूर्ण करते हैं। ये भागवत की कथा यहाँ चल रही है। अब मैं हमारे मुख्य यजमान कौशल्याबेन जी को सामने ये देता हूँ, आप उससे कुछ। नमस्कार, जय अम्बे। जय अम्बे, जय श्री कृष्ण। कैसा है माहौल लंदन में? भारत में तो पता ही है कि सनातन धर्म किस प्रकार से प्रचार कर रहा है और हर दिन हर होता है यहाँ पर। स्वाहा जो है हमारे कानों में गूंजता रहता है हर समय, हर क्षण। तो लंदन में कैसा माहौल है? व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड द वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर इन लंदन? व्हाट यू फील? आपको कैसा लगता है लंदन? We are very lucky, I think, having this kind of katha in my house. We always have some kind of celebration every year. Whenever sadhu or guru who comes actually in the leads, we usually say, please, come and give us blessing. So they always come here. And
they stay here. Swaminarayan, actually, they also come, when they come here, they stay nearly a week, and they do like a spiritual, katha or talk, because I was very, very young when I came from India, about 10 years old. And then I was in Zambia for a couple of years. And when I came in UK, I came in 1968. So from that day, I didn't have much knowledge of Hinduism. But as soon as, they all gurus and, the sadhus who comes here, Pramukh Swami also came here. They stay here for a week. So we get all this knowledge, from all gurus. And I think we are very, very lucky to have all this guru in my house. And like what Bapu say, I have 4 daughters who are educated, married, they got children. So it's always help, to my family as well, that they also getting blessing from us. And I'm teaching my children also Hinduism, because they're all born here, and they have a different culture in this country. They're following like Christianity or, whoever they meet actually in the group, they're following that kind of a religion. But I think since we have all these events which is happening in my house, they're also learning. And I think they are very, very happy that we are taking this in our house, this katha. And I hope, that everything will, will follow as Guru says, and we need just blessing from Gurus. So, Jai Shri Krishna. Yeah, I think, with the spiritual is also, I think, teaching our own background of Hinduism. And like I said, my children, never sort of, because they're born here, following Hinduism is very hard and very hard to understand, because we have so many gods. So they always have a question, why we have so many gods. First, I couldn't actually answer why we have so many gods, but now because I'm learning, I can explain why we have so many gods in our Hinduism. So it's hard for them because they're born here, brought up here, so they also have their own friends who have different, the religion. Kind of. So they were very, very confused before, but now I think, they are learning, and I'm glad that they're teaching their children as well. So every night, my all daughters, they're teaching, the children Hanuman Chalisa. So even young as 2 years old, also said Om, and they, he can say a couple of words, from Hanuman Chalisa. So they're all learning Hanuman Chalisa, which is, I'm very, very glad and pleased for myself that I have teach, my children this kind of, religion that they can follow and their children can follow, and they can teach their children, instead of confusing. So no, I'm very, very pleased, very pleased. So thank you very much. Thank you. भगवान के 24 अवतार आते हैं। अभी हमारे कौशल्या जी ने कहा कि सो मेनी गॉड, मुझे भी कुछ थोड़ा इंग्लिश आता है। जो क्वेश्चन है इसका जवाब भागवत है। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 24 बार हमारे प्रभु ने अवतार धारण किए हैं। और हरि जन्म के हेतु अनेका, भगवान का जो प्रागट्य हुआ है उसके कहीं कारण है, उसके कहीं हेतु है। वो श्रीमद् भागवत में उसका दर्शन है। इसमें 10 अवतार मुख्य है, और 10 अवतारों में से राम और कृष्ण अवतार, दुनिया के किसी भी भगवान ने सीधा ये नहीं कहा है। इस दुनिया में जितने भी धर्म है, तो उसमें किसी ने कहा कि मैं भगवान का संदेशवाहक हूँ, किसी ने कहा कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन हमारे कृष्ण ही ऐसे भगवान है जिसने सीधा कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा कहने वाले एक ही भगवान है, वो कृष्ण है। तो How are you? What's your name? Fine, thank you. Introduce.
Is it audible? I'm Tina Kimmett. टीना किमेट I am so happy to see you in Skype by the platform of online platform, and we are very easily connected. I am from India, from Gujarat, and you are in London, in UK. So technology had reduced the distance. Though you are very far away, but by heart, by your feelings, we are very near to each other. Am I right? Yes, that's right. Yes, I enjoy different cultures and watching what goes on. Like when Jag lights all the candles on a morning and does the rituals and that. It's nice to see. So you like Indian culture and Indian tradition and the way we do the katha and all. Do you like this? Yes, that's right. Yes, I'm interested in it. I'd like to see it and like my kids to see different cultures and things. It's nice. What do you know? What is Hello. Namaskar. बहुत बहुत वेलकम स्वागत है. यू आर वेरी मच वेलकम इन अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्काइपी. उज्जवल भारत न्यूज से यू आर वार्मली हार्टली वेलकम. So what you are in UK, so what you feel about the Indian culture, especially the Katha and the Bhagavad, about staying in London, what you feel about Indian people, what you feel about the Indian culture? I've always been very interested in the culture. I go to Gurban, or I used to go to Gurban on a regular basis. I also have read the Gita, the Bhagavad Gita, but in English. So you can read it on Amazon and you can read it like translated. So I've read the Gita translated, and I really enjoyed it because it takes you into spiritual things. And I'm quite a spiritual person. You know, Narendra Modi, Prime Minister, Honorable Prime Minister, he is doing tremendous job to make the yoga, especially yoga and the Indian culture, the Vedic literature, to enhance throughout the world, spread throughout the world. So what do you want to say about our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi? From what I know about him and from what my parents have said to me, he seems as though he's quite a genuine person, and he's trying to do the best he can for the country. So I believe he's a good person. Very true. So, do you visited India? I have visited India, yes, a long time. लाखों दर्शकों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं. ये हमारे जगदीश भाई पारेख कुछ आपसे बात करना चाहते हैं. हमारे यहाँ जितने भी साधु संत आते हैं लीव्स में, सब हमारे घर में आते हैं. और एक वीक तक रहते हैं. हरिद्वार में जो हरिवल्लभ दास जी है, उसका जो स्वामीनारायण आश्रम है, वो लोग भी 3-4 साधु के साथ आते हैं, रहते हैं. सब बच्चे लोग भी सुनते हैं, गांव के लोग, इधर के लोग भी आते हैं. सब कुछ एवरीथिंग अच्छी तरह से चल रहा है. और हम लोग सब श्रीमद् भागवत है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, सब में हम बहुत मानते हैं. जय श्री कृष्ण, जय अम्बे. Bala
करूं, मैं तुझी तरफ